Great. Welcome everyone to today's open discussion. And those of you who are joining us for the first time, a little bit about how these open discussions go. These are open calls where we keep the conversations from both the sides. So it's not like we are going to deliver something to you guys. We are just going to have a conversation and then see that in which direction it goes and how we can, add more things to it. So that's that. And today's topic is about the fear of abandonment, which is one of the very common kinds of fears that we see, which also varies from different degrees in different ways, comes out in different forms of reactions from our part. So any of you who have been through any of the traumatic incidences where you were like literally physically abandoned by a loved one in your life, or maybe you were raised in an environment where there was a lot of chaos, a lot of instability. Uh, People are available and then they are not available. People are there for you, but then just after some time they are not there for you. So you really cannot gauge as a child if the support and safety that you're looking for is going to be there for you. If you were giving if you were given mean remarks as children too many times कि अगर ये नहीं करोगे ना तो तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको खाना नहीं देंगे. These unconscious unintentional things which sometimes are not so serious but a lot of times are very serious from parents. They actually do all of those things, or they lock you down in the room, they leave you alone, um, and so on and so forth. All of these different things, leading to the fear of abandonment, which basically means that you have a fear that people will leave you, or people will abandon you, people will reject you, right? So that's a little bit about what can lead to fear of abandonment, and how it shows up in people who have this kind of a fear is through a form of extreme anxiety, overwhelming kind of anxiety, right? Where you always feel that you're walking on eggshells. If you make a mistake, then the other person will leave you, or you always have to, make sure that everything is going perfectly fine. When you're not able to make sure that everything is going perfectly fine, there's a constant mental chatter that happens in your head, which makes you feel like, maybe um, maybe this person is with me for these or these reasons. I don't know if they're going to be there. Am I doing anything wrong? Am I making a mistake? Or what if they leave me? These kind of questions as well coming in our head all the time. That what if they leave me? What if they abandon me? Or maybe we continue to question ourselves only that am I even worthy of being with that person, this person? What if they, find me inappropriate, find me not suitable, not enough, and they're going to leave me? So the state of, constant anxiety, the state of constantly questioning the intention of other people, constantly questioning your own self that maybe I'm doing this wrong, maybe I'm not enough. Mm. And not being able to trust other people, not able to trust your own selves, that things can be fine, and needing constant reassurance from your own self, बिल्कुल अपने आप को बार बार ये चीज बताना पड़ता है कि it's gonna be fine, nobody's gonna leave you, or seeking reassurance from other people that तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे, तुम छोड़ के तो नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी ना, and you're going to be there with me or not, asking these kind of questions and feeling this way, right? So seeking that kind of an attention. Also, these people tend to be perfectionists because they're afraid that in case they make a mistake, or in case anything goes wrong, they
will be abandoned, and then that's why they have to make sure that they get things right, so that they don't give a chance to other people to lead them. Another dynamic, so basically, these are some constants which are there. These people can also be desperate for attention. In some cases, not with everybody, but in some cases, क्या होता है कि because हमें इतना unsafe और insecure feel होता है, तो हम, let's suppose, एक partner हमारे पास है भी, ठीक है, तो people don't invest fully in the relationship, और उसके अलावा उनको 4 ऐसे और friends भी रखने हैं अपने साथ, जो कि इन केस इस रिलेशनशिप में कुछ गलत हो गया ना, सो दे विल बी एबल टू बाउंस बैक टू द अदर पीपल. सो इट्स लाइक ये वाला भी है और वो वाला भी है, राइट, कीपिंग दोस ऑप्शंस अलाइव, कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, देन मतलब सडनली मैं एक को छोड़ के आई कैन जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप. सो ऑलवेज कीपिंग टू मेनी ऑप्शंस ओपन, while also नॉट इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप फुली. हाफ एस रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि पता है ना, कभी भी छोड़ के चले गए तो अबैंडनमेंट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी. इसके लिए पहली चीज तो पूरा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही मत करो. और दूसरी चीज, करना है रिलेशनशिप, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव ऑल हैव इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स. We all want to spend time with people, have somebody to share everything with and all that. बट पता नहीं यार, ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी छोड़ के चले जाए, तो इससे बेटर है कि हाफ एस इन्वेस्ट करो, पूरा इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज दिल टूटेगा तो दुख होगा. इसके लिए और 4 ऑप्शंस भी हम रखते हैं साइड में, राइट, कि कहीं एक खराब हुआ तो ये दूसरे ऑप्शंस तो हैं अवेलेबल मेरे पास. सो दिस इज वन काइंड, नॉट एवरीबडी डज दिस, बट दिस इज one thing which is observed in a big chunk. Another thing which is observed in another big chunk is people get too clingy or too needy or too controlling, right? So people become like overburdening, कि पूरे टाइम अपने पार्टनर के सर पे बैठे रहना. नॉट जस्ट द पार्टनर, इट कैन हैपन विद फ्रेंड्स एज वेल, इट कैन हैपन इवन विद कॉलीग्स एज वेल एट वर्क प्लेस, दैट यू बिकम सो कंट्रोलिंग, सो क्लिंगी, सो नीडी, कि everything has to be according to you. The other people have to be according to you. You try to control everything, right? And you invest too much in the relationship, right? So it's not about so it's basically about कोई स्पेस ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इतना फियर है अंदर कि कहीं जैसे ही स्पेस छोड़ी, सामने वाला बंदा कहीं और ना निकल जाए. सो आई हैव टू होल्ड इट लाइक really really tight in all different possible ways. So a lot of people also become very clingy and very needy in this particular case. So those are two sides which can happen, which in two ways in which it can come out in people. Along with that, these people tend to be people pleasers. When we have a fear of abandonment, we don't know how to set boundaries. We don't want to confront people, क्योंकि हम अगर उनको confront करेंगे और गलती से हमने उनका दिल दुखा दिया, तो वो छोड़ के ना चले जाए, है ना. So we don't want to confront, we don't want to set boundaries, we don't want to say no, we don't want to what should I say? So basically we are trying to please people in all different ways, and we are trying to be too over considerate, too kind and too compassionate and everything. हाँ ठीक है, you make me a doormat, walk over me, and because I don't want to be abandoned. So in these different ways it plays out. In fact, it goes to extent where when we are having these kind of fears about abandonment issues, we cannot even handle disagreements, right? Because disagreements को हम project करते हैं as rejection, क्योंकि हमें ये fear होता है कि सामने वाले ने मुझे reject कर दिया, सामने वाले ने मुझसे agree नहीं किया. So we do not have the eye to see where it's criticism and where is it's a disagreement. तो हम वो चीज इतना mentally बैठ जाती है
when we have seen it in our childhood, people disagreeing to us and telling us कि तुम तो बहुत stupid हो, तुम सब कुछ गलत करती हो, तुम सब कुछ खराब करते हो, तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये भी ठीक से नहीं कर सकते, तुम्हारे 95% मार्क्स आए, बस 95% मार्क्स आए, 100% क्यों नहीं आए, राइट? सो इवन not having enough appreciation in life while always being criticized, तो उसमें क्या होता है कि we develop a very toxic kind of a relationship with mistakes. So हम जब वर्क प्लेस पे होते हैं और when we are having a romantic relationship, हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड कोई भी जरा सा भी डिसएग्रीमेंट शो करता है और हमें ये लगता है मेरा आइडिया नहीं माना, right? And then the problem arises when it is something really important for us, something really meaningful of us, something of really of value to us. But then पहली चीज तो हमें ये लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो हमें ऑलरेडी वो सेटबैक हो जाता है कि मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया. But then because we have the people pleasing tendency, we very easily give in rather than even sharing with people. हम ये पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमने शेयर किया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो विदाउट इवन शेयरिंग वी डोंट स्पीक व्हाट वी वांट, एंड उनके हिसाब से सब कुछ चलता होता है, बट देन एट द एंड वी फील रिजेक्टेड एंड वी फील रिजेंटफुल कि मेरे हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं है. सो बेसिकली वी प्ले द बॉल फ्रॉम बोथ साइड्स, कि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ बिना बोले ही सामने वाले को सब कुछ समझ में आना चाहिए, है ना? एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग इट, इफ दे आर नॉट psychics, they cannot, they don't know mentalism, they cannot read my mind, that means they are abandoning me, right? And for me to protect myself, I have to give in, I have to please them, I have to say yes to everything, right? And thus making us more anxious, more resentful. तो ऐसे ये साइकिल हमारी लाइफ में चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये चीजें बहुत इंटेंसिफाई होके एक्यूमुलेट हो जाती हैं, these things go very deep into our psyche, our body, into our bones, right? And then we start developing different symptoms around these things. We start having relationship issues, we start having issues at workplace, we start these patterns start becoming rigid. There are more mood swings coming into picture of high and low, because we are losing our emotional regulation, right? So, or maybe there are people who have become too good to mask it on the outside, but from the inside, they know the kind of burden that they are holding on their shoulders, right? So, वो चीजें कहीं जाती नहीं हैं. They start coming up in the form of mental illnesses or emotional baggages, and having these upheavals and ups and downs and emotions and all that. फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना? So that's the accumulation speaking. Because घड़ा भरता जा रहा है, हम कभी खाली नहीं करते, कभी खाली करने पे ध्यान भी नहीं देते, है ना? So that's a little bit from my side about fear of rejection. And so now we would like to know from you guys कि इसमें जो भी pointers मैंने आपसे share किए, so anybody here, first I would like to get a thumbs up कि who could relate to most of these points. Have you gone through these things? Have these things happened with you as a child? Okay. Thank you. Thank you so much, guys, for sharing. Right. Thank you, guys. Thank you for sharing that with us. So, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था which led you to this, and how far you have come on your journey? How did you handle these things, and how you're going forward in your journey? Anything in any of these parts you would like to share, then we would like to know from you. So you can just unmute and talk. You can share your stories and experiences कि आप में ये fear कैसे develop हुआ. That is also absolutely fine. Yes, Kavita.
Yeah, so I would like to share, like you told me that people pleasing is also a kind of fear of abandonment. So I was being a people pleaser for a very major part, like almost 25 years of my married life. I was like just trying to please my in-laws, my husband, and my kids, and everyone around me, just to be tagged as a perfect person. But I was not getting there until I came into this spiritual journey and all, and then I came to know that it's a very big myth too, that I can please everyone around me. I can't please everyone around me, and perfection is the biggest myth. Like you don't need to be. Otherwise, I was just trying to be perfect, a perfect wife, a perfect bahu, a perfect mother, everywhere, a perfect daughter. And that was like, it was not working for me anywhere. And when I came into this spiritual journey, then I came to know, I understood it. I can't be मतलब किसी को खुश तो आप रख ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी कहीं ना कहीं पे, कुछ ना कुछ किसी के लिए छूट ही जाएगा. एंड सबसे बड़ी चीज थी कि एवरीबडी वाज लाइक कि बी परफेक्ट, बी परफेक्ट, बी परफेक्ट. एंड देन आई केम टू नो दैट perfection is the biggest myth. No, everybody has a different definition of being perfect. So you can't be perfect for everyone. You will be imperfect for someone. So it's better to be perfect in your own eyes. कि, okay, whatever I am doing, this is the definition of perfect for me, and now I will stick to this only. Hmm, hmm. Right, right. And when you were doing all of those things, when you were trying to be perfect for everybody, and you know, कैसे भी करके बस वो एक जो battle होती है, how did it impact you? How did it made you feel? I was like always in a mess, always just trying to do everything to my best I can do, and it was not working for me. I was not happy from inside for those all years. Like it was like I was always seeking कि if अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ, अगर my husband is happy तो I am happy, if my in-laws are happy तो I am happy. It was, I never found that whether I myself happy with myself or not. I was just trying कि सब मेरे से खुश रहें. I was not focusing कि मैं खुद अपने आप से खुश हूं कि नहीं हूँ. What's my? It was like for after all those years, I एक छोटी सी बात, when my therapist first asked me what's your favorite color, मुझे वो भी याद नहीं था कि what was my favorite color, what was my favorite food. मतलब I had totally given myself to all the people around me, whether it's my parents, my in-laws, or my kids, my husband. I was not myself all those years. And that at the end, what it all just, it came to a mental breakdown. It came to a kind of nervous breakdown. Yeah, yeah. I I can understand. And rejecting yourself so much, makes you feel really, really resentful over a period of Yeah. time. कि जब हम वो कर रहे होते हैं तब तो हम अपने आप को काइंड ऑफ कंसोल करते रहते हैं या सांत्वना देते रहते हैं कि देखा मतलब मैंने ये कर दिया, ये सामने वाला तो हम्म. खुश है ना, ये हम्म. तो खुश हो गया ना, यही तो मैं चाहती थी ना, खुश हो गया ना, बट देन we at the And cost then of now, our own selves. and now I can relate very much that you told. Yeah, of course, in my childhood, I was never appreciated for the things I did. I was always being like, you are not good enough for anything. Like, I was uh, in anything, like, it was always like, you are not good enough. You tried hard, you tried more. Yeah, when I was married very early. I didn't have any kind of confidence in myself. I was such a self-doubting person. Right, right. Absolutely. Absolutely. When you keep hearing all the time,
that you're not good enough and you cannot do this, you cannot do that, and you're never appreciated. That is also very important point कि हमें गलतियां तो सारी की सारी गिनाई जाती हैं. Yes. But when you're not told, anything that you have done right. So both of these things, मतलब हम सब गलतियां करते हैं, and it's important for parents to, bring it out in front of us because it's important for us to improve. But उसके साथ साथ में ये भी important है that we appreciate children for the rights they are doing, the good things they are doing. But yeah, but that goes out of proportion. And then this happens that we lose the confidence and self-worth and costs a lot of things. So, thank you. Thank you for sharing, Rupa. How about others? Akarna, anything you wish to add? Nothing right now. अभी तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग. Okay, cool. So, which of the points, anything that struck out for any of you in the pointers that I was talking about, anything that you've personally gone through or are going through, या ऐसे कोई चीज लगती है कि नहीं ये अभी भी ये वाला इशू जो है it bugs me. So anything you guys wish to share, you can. We don't have anything to deliver as such, guys. So as I told you in the beginning that this is going to be more conversational. So we would like to hear from you guys. Otherwise, we don't know how to, take the conversation forward. Yeah, Anamika, can I ask something? Yeah, sure. See. So, this fear of abandonment, can it lead to pushing people away? Matlab, what happens? What is the dynamic behind it? If it does happen, ki we are already like scared of being left out alone, but at the same time, we are pushing people away. Can that happen in this uh, attachment style as well? Yes, absolutely. Absolutely, it can happen. In fact, people who have this fear of abandonment, a lot of them tend to push people away because वही बात आ जाती है ना कि इससे पहले कि वो हमें अबैंडन करें और दुख हो इससे पहले हम ही उनको अबैंडन कर देते हैं. So it's actually the opposite thing happening. What they have gone through as a child or through any other incident in their life, not necessarily with parents only. बट जस्ट बिकॉज दे हैव बीन अबैंडन्ड और वो उस चीज से गुजरना नहीं चाहते हैं, वो अब दूसरों को अबैंडन कर देते हैं. वो खुद नहीं गुजरना चाहते हैं उस चीज से, बट वो दूसरों को ये चांस ही नहीं देना चाहते हैं कि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं कि रिलेशनशिप होगा तो अबैंडनमेंट के रिस्क तो हैं हमेशा, राइट. सो इट्स लाइक ऑलवेज कीपिंग दैट पुश एंड पुल डायनामिक. सो fearful avoidance, when people pick up that particular style where there is a high need of intimacy, where they want to be with people, उनको लोग चाहिए भी, but at the same point of time, let's suppose they have a fear of abandonment, right? तो उनको अब लोग भी चाहिए और उनको उनको लोगों के साथ रहने में डर भी लगता है, right? Because there's a constant state of anxiety and fear happening कि ये छोड़ के चले गए तो छोड़ के चले गए तो. So इसके लिए they will पुश पुल डायनामिक में व्हाट दे विल डू कि वो बहुत मतलब पहले तो बहुत इंटीमेट हो जाएंगे. इन दैट इंटीमेसी दे विल say a lot of things, do a lot of things. They'll be a completely different person by then. And then जैसे ही सामने वाला बंदा मतलब थोड़े दिन ये चलेगा, बट द मोमेंट द अदर पर्सन कम्स फॉरवर्ड एंड दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप, कमिटिंग इन द रिलेशनशिप, या इसको आगे लेके जाने, मेकिंग थिंग्स मोर सीरियस, that moment they get afraid.
राइट? क्योंकि जैसे ही चीजें ज्यादा सीरियस होती हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है रिलेशनशिप में, एंड देयर इज अ नेम कमिंग फॉर द रिलेशनशिप, एंड देयर इज अ क्लोजनेस कमिंग, इंटीमेसी कमिंग, और सो मेनी थिंग्स कमिंग अप। अब इसमें फिर गड़बड़ हो सकती है, इसमें देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग हर्ट। सो इससे पहले कि सामने वाला मुझे अबैंडन करे, काम करती हूँ मैं ही भाग जाती हूँ या मैं ही भाग जाता हूँ, तो उसको ना चांस ही नहीं मिलेगा अबैंडन करने का। सो दे मे इवन गो टू एन एक्सटेंट वेयर दे विल जस्ट सिंपली गोस्ट पीपल, राइट? बिकॉज अगर वो कन्फ्रंट भी करेंगे, उसमें भी अभी चांस है ना रिजेक्शन का या अबैंडनमेंट का। वो भी नहीं करना है। एक कुछ ऐसा पॉपुलेशन भी होता है जो बिल्कुल गोस्ट कर देंगे, राइट? कई लोग गोस्ट नहीं करते हैं, बट दे विल जस्ट गिव देयर ओन, मेक अप देयर ओन रीजंस ऑफ नॉट बीइंग इन द रिलेशनशिप, द सेम रिलेशनशिप विच वाज नाइस एंड गुड सम टाइम बैक, बट अभी ये उनको, मतलब अभी डर डर गए, अभी नहीं, अभी भाग जाओ यहाँ से, right? So fearful avoidance people who have developed that kind of an attachment style, they tend to do that back and forth, push and pull all the time. Does that answer your question, CP? Yes, yes, it does answer my question, Anamika. So, a fear of abandonment can also be there in avoidant attachment styles, right? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स में भी हो सकता है, बट अवॉइडेंट्स जो होते हैं, हुआ डिसमिसिव अवॉइडेंट्स, नॉट फेयरफुल अवॉइडेंट्स। Mhm. पहली चीज तो उनके साथ ये द काइंड ऑफ पैटर्न, द काइंड ऑफ स्टाइल दैट दे हैव डेवलप्ड, कि उनको फिर जाना ही नहीं है, वो पहले ही डिसमिस कर देंगे। ठीक है, वो मतलब फियरफुल अवॉइडेंस तो बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं ना, वो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। जो डिसमिसिव अवॉइडेंस होंगे वो तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जाना मतलब दे हैव बेसिकली क्लोज डाउन ऑल द डोर्स ऑफ गेटिंग इनटू एनी फर्दर ट्रबल, because they have made this thing clear in their head कि यही होना है, in case they have a fear of abandonment. So उनको ये चीज आ गई है कि I don't need to trust other people, I can just trust myself. So let me just be alone and let me just be by myself. I don't care and I don't give a damn. Okay, okay, Anamika, got it. Thank you. Yeah, thank you, CP. Fear of abandonment can be there in any form of insecure attachment style. Akarma, anything you would like to add? No, still nothing from my side. Okay. ठीक है. Anamika, Yes, Mashmi. can you just repeat the last sentence that you said? Fear of abandonment exists in dash style. Fear of abandonment can exist in all kinds of insecure attachment styles. सब में हो सकता है. जरूरी नहीं है कि सारे ही इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अबैंडनमेंट से बने हों, बट फियर ऑफ अबैंडनमेंट अगर है, इट कैन लीड टू एनी ऑफ दीज इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स. Cool. Yes, Lata, you want to say anything? Hey, Anamika. So, Anamika, instead of abandonment, what if we have fear of being judged? Is that the same, being judged or abandonment? If we avoid people or avoid relationships or, fear of being judged, क्या बोलेंगे लोग, and all those things, कि कहाँ कमी पड़ गई, something, sometimes we invite people and we feel कि, they'll judge us, something like that. तो क्या is the same abandonment or judgment? These fears, are they correlated, interconnected maybe? How should I say? So all the people who have fear of abandonment, उनको inherently उनके साथ ये problem होगा that they fear that other people will judge them. क्योंकि उनको ये लगेगा कि if they are judging me, there is a chance that they're going to leave me.
But when it comes to just fear of being judged or fear of, being criticized and all that, that necessarily does not have to come from the fear of abandonment. It can come from issues, similar issues in childhood, but in different forms where, every time you make a mistake, you were judged for that, right? Or you were criticized for that, or maybe you were not abandoned for that, but you were highly, judged, and you were told that, oh, you're, again, the similar sentences that you're so stupid, and, uh, um, you cannot do this nicely, you cannot even do this much, you cannot do even that much, or, using some kind of bad words. So, जैसे कि, for an example, in my childhood, जब भी कोई चीज होती थी, मुझे कुछ भी ऐसे काम बोला जाता था, एंड अगर इन केस मुझसे उस चीज में गलती हो गई, right, then not from my mom but the place where I was living, so then there, at my maternal parents' place, grandmother's place, I would hear some words which were not very good to hear, you know good on my ears, right? And as a child, there's a kind of, वो एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ Yeah. जैसे ही जजमेंट आ रहा है ना, तो उसके साथ एक अंदर से कुछ एक वो भी आ रहा है कि मतलब इसका मतलब ना ये है, एक वो एंकरिंग हो गई कि जैसे ही सामने वाले ने ऐसे कोई वर्ड्स यूज किए, वहां पे एक टेंशन आने लग गया. Because as a child, we all want to be accepted and acknowledged and loved and appreciated. ये basic, we all want to be seen and heard. So वो basic होता है. So वहां पे हमें शायद ये ना लगे कि people will abandon us because nobody abandoned me. But the thing is कि हमें ये लगता है ना कि ओहो, मतलब अब तो गड़बड़ हुई और अब तो they are gonna judge me. Now they are going to say something bad. Right, and then I'm gonna feel really bad about it, and then I will मतलब वो maybe not verbally but वो सारी चीजें बिल्कुल निकल के बाहर आने लग जाती हैं कहीं ना कहीं अंदर की. अब इसके बाद ना ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, this kind of a tense situation, this is how I'm gonna feel and they will make me feel, even though there's a possibility कि ऐसा कुछ भी ना हो रहा, but अभी वो anchoring develop हो गई है. So because of that we have that fear of, judgment. Yeah, somewhere it is true. But even if I think about it, even if it is not there in the childhood, but constantly, even at work or maybe with friends, families, when we meet. So एक thread हमेशा चलता है ना when we meet someone कि expectation क्या है, are we really fulfilling, या if someone is coming home, क्या चेक करेंगे, क्या होगा, खाना कैसा होना चाहिए, all those things, थोड़ा वो जज करने वाला एक थ्रेड हमेशा चलता रहता है कि what if people will think like this, या वर्क पे भी कर delivering something तो क्या रिव्यू आएगा. So all those thread, I mean, it really obviously ये help भी करता है कि we become more productive and deliver good things, obviously. But it should not happen out of fear is, what I want to say. So just wanted to avoid that as Yeah. a fear instead of Yeah, yeah, because to what extent you will go? Like when Kavita was talking, she was saying this thing ना, क्योंकि सबके perfectionism के definition अलग-अलग होते हैं. Perfect का definition अलग होता है. आपके घर में एक guest आएंगे, उनके हिसाब से maybe your house is very tidy, right? But हो सकता है कि कोई दूसरे guest आएंगे, उनके हिसाब से your house is very dirty. It's the same house, same place, same thing. Everything is placed the same way. But then both of them have different perspectives. एक correct. one But question yeah, that is coming to me is when you're saying it shouldn't be like this, it shouldn't be coming from fear. That is what you're saying. So then the question that comes to my mind is, what is the fear? What is the fear that you're trying to avoid? fear of being judged or maybe negativity that will build. If you Even are if even judged, suppose they're not if you are judging as judged, well. Suppose not judging as well. But suppose एक even if thread they ना. are judging, but I'm saying हाँ suppose हाँ they are हाँ. judging, तो क्या problem?
क्या हो जाएगा जज करने से? It might impact my peace of mind कि ऐसा कैसे सोचा, या I mean this is how it is. I mean I do not take so much into consideration of others view. ये सपोज जज भी नहीं किया, चलो लोग आए गए, बट मेरे इसमें दिस इज देयर कि नहीं, ये चीज उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, या ये सोच नहीं आनी चाहिए. पर सो क्यों नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन तो ये ना. चलो वो आपने बोला नहीं आनी चाहिए तो वो एक बात होगी, बट वो तो हो नहीं रहा, आ रही है. नाउ व्हाट इज द इशू? आ रही है तो इशू क्या है? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि या उसमें भी तो कोई फियर होगा ना आपका. नहीं फियर आनी ऑफ, चाहिए इज अ फियर लैंग्वेज इटसेल्फ, राइट? यू अंडरस्टैंड करेक्ट. दैट व्हेन यू आर सेइंग कि नहीं आनी चाहिए, तो मैं डर से ही तो बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा. तो अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इफ आई रिफ्रेज इट इन द अदर वे कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज आई एम स्केर्ड, तो मैं ये पूछ रहा हूँ हो गया तो एक्चुअली में व्हाट आर यू स्केर्ड अबाउट? क्या क्या हो जाएगा उससे? सो व्हाट इज इट दैट यू आर बिल्डिंग इन योर माइंड कि ये होने से ये हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये ना हो, तो क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव आइडेंटिटी या इमेज जो आई डोंट वांट इट कि कोई पोर्ट्रे करे, या आई बी बिकम अ पार्ट ऑफ ठीक है, समवन्स गॉसिप. ठीक है, गॉसिप, या ठीक है, ठीक है. सो अभी वो भी हो रहा है तो उसकी भी क्या प्रॉब्लम है? Let's say कि they are creating a negative image about you, then what is the issue with that? so that impacts the way I will behave with them next time. In suppose, there was an incident. What happened is, I got recently moved to some other, work No, but area. they've just Huh? just 1 minute, Hmm, 1 minute, hmm, 1 minute. लेकिन huh, ये huh, huh. आंसर आप जो दे रहे हो, this answer is about your response. I'm not asking about your response. I'm saying नहीं, कि अगर रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स ही मुझे नहीं पता. दैट्स व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. आई एम स्टक एट समथिंग. अच्छा, सो मे बी यू कैन डिकोड दैट कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम स्टक एट. So what happened at my workplace? I was given some work. Obviously, juniors were not happy with that movement. And in a recorded call, I had recorded that call. And when I listened to the recording, I had moved out of that call. But after that, two people were gossiping about me. So after that, वो जो thread है कि यार, obviously, someone has designated some work to me, it is fine. But they are not happy about it कि मुझे वो काम दिया गया. तो वो जो फियर है कि जज कर रहे हैं कि मतलब आई एम नॉट द वन हु हैड आस्क्ड फॉर इट, माय बॉस हैज गिवन मी एंड आई एम डूइंग दिस. बट जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, आई गॉट दैट. अनफॉर्चुनेटली मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली. एंड उसके बाद में आई एम नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दैट कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी एट द बैक इन दिस वे. तो I know it should not happen या हुआ तो क्या, but it is impacting. Is I'm not sure why, but that is what I'm I am. saying कि Hmm, what hmm. you are describing is that it is impacting you or it will change the way you will deal with them and all that. ये तो external behavior की हम बात कर रहे हैं. वो आई गेट दैट, बट मेरे को ये नहीं जानना. मेरे को ये जानना है कि अगर वो आपको जज कर रहे हैं एंड ऑल दिस इज हैपनिंग, सो उससे आपकी नेगेटिव इमेज अगर बन रही है तो उससे आपको किस बात की तकलीफ होगी? तकलीफ ये नहीं है कि मुझे अपनी बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा या मेरे पे ये इम्पैक्ट हो रहा है, ये तकलीफ नहीं है. तकलीफ कुछ और है. दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. Exactly. So even I'm not sure. Maybe obviously जब कोई praise करता है, you get happy, and when you hear the negative feedback, it gives some unhappiness कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, but yeah, ठीक है. Although we know कि feedbacks should be taken in a positive manner, but starting में तो setback जो लगता है कि हाँ, तो so it अगर is मैं kind इसको of ये that. बोलूं, Hmm. अगर मैं इसको ये बोलूं कि right, again, I am just taking an assumption here. We have not met. I don't know you that well or anything. तो मैं assume करके ही बात कर सकता हूँ कि ये हो सकता है कि
this when you hear all this, you get this feeling ki you are not good enough, Yes. and then you have to prove that you are good enough. Yeah. Yeah. So I feel ki, instead of discussing, obviously I've got the feedback. I haven't discussed with that person, I got to know all those things and I got the recording and I got to hear this. Obviously I cannot हाँ, go back and discuss with तो him. ये वाला But जो I just, ये next वाला जो action, what I'm टेंडेंसी, thinking is, yes, नहीं नहीं yes. अभी छोड़ दो, एक्शन छोड़ दो. First understand the problem before you jump to the action. So अभी छोड़ दो action. The problem is that you internally feel that you're not good enough. This is Yes. linked to when we attach the definition of love with being good. So a conditioning that has happened within you is you will only be loved if you're good enough. Yes. And that's a conditioning that has been developed in you from early childhood. Father Yeah. की तरफ से होगा, mother की तरफ से होगा, pushing parents who are pushing you to prove to them you are good, और उनको prove करके ही आप उनको खुश कर सकते, और वो खुश हो ही नहीं रहे हैं. The Correct. bar is always moving. Yeah. So you just keep jumping high and then they just raise the bar and you have to jump more high and they raise the bar. So basically it doesn't matter आप कितना भी उछलो, the bar will keep rising, and ultimately the message that a child gets is I'll never make it, I'm never good enough and I'll never win this love. Yes. True, Akarma. So now the question is, are these two things linked? Should you be loved because you have to prove that you should be loved? Do you have kids? Yes, somewhere, Do you no, have it is not, kids? it should not. Yeah, yes, I have one kid. Okay, you have one kid. So does that kid have to prove to you for you to love that kid? No, of course not. हाँ. तो ये बिलीफ आपने अपने बच्चे के लिए तो अडॉप्ट कर लिया है, बट खुद के लिए नहीं. But even if let's not talk about the love, maybe, but what about at work? Because obviously, it is kind of But love a is not, I'm professional. not, so love Hmm. is not here in terms of romantic love or anything. Love is just a feeling we're talking about, through which you feel connection, belonging. Yeah, So love is feeling of used in that belonging. sense. Yes, Belonging is feeling what of I belonging. feel. Yes. Correct. Hmm. Hmm. So love is used in the sense of connection, belonging, that way. Love is not here, I'm talking about romantic love between husband and wife or anything like that. Love as in love between two sisters, brothers, or any person, a friend. You feel connected and a bond. To win that, आपको basically you you feel you have to earn it. That is the conditioning that has been given to you. You have to Yes. earn it. Yeah. Yeah. That is Even at the workplace. crux of it. Even at work, Correct. as it's not even at workplace. No, no, no. It's not even at workplace. It is your conditioning which you see at workplace also. But isn't it true? I mean, at It's not. workplace, obviously, at It's not. workplace, It's not true. unless you deliver or you connect nicely, people will not be accepting you. It's not true. But that's what I'm saying. It's not true. It's not a universal truth. There are many other ways. This is what you have learned.
आपने जो सीखा है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपको वही दिखने वाला है। हमारी आंख पे लाल चश्मा है तो मुझे हर जगह लाल ही लाल दिखेगा। इट डजंट मैटर कि बाहर कौन सा कलर है। It's not, I am not denying कि it is false. I am not saying it is false. I am not saying it is true. What I am saying it is gray. So it is neither 100% true. It is neither 100% false. It is subjective. There could be people like that who also come from that. Maybe somebody who is doing this comes from such kind of conditioning from their childhood as well, and they are doing it. दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग। हमें नहीं पता है कि सामने वाला क्यों कर रहा है ऐसा, लेकिन हमें तो ये देखना हम क्यों कर रहे हैं। पहले हम तो करना बंद करें इसको, फिर देखेंगे ना कि सामने वाला भी वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे यही दिखेगा कि सभी ऐसे कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया है, ऐसे ही चलता है, और आपके लिए ऐसी ही दुनिया है, बिकॉज उस बच्चे को वही सिखाया गया है कि ऐसे ही होता है। Yeah, I mean, even when we talk about the relationships, don't we talk about working on it? कि उसमें can't take things for granted. तो हर relationship, everywhere we need to put in efforts. If we are short of somewhere, we will be judged. We might get abandoned अगेन or yeah. अगेन मैं आपको वही बात बोलूंगा कि ये this is what you are saying is neither true nor false. It's great. It is subjective. So if you say it like this कि we are learned this way, तो अगर आप इसको एक as a universal truth की तरह स्टेट कर रहे हो, तो I am saying it's not a universal truth. It's not like that. हाँ, बट हाँ, मैं इस बात से अग्री कर सकता हूँ कि ये आपका सच है। I'll agree with that. It is your truth. It is not the But truth. correct. There will be exceptions for sure, but don't we have to put in efforts to earn even for the relationship? Don't we नहीं, have to put आपने in इसको बहुत जल्दी everywhere? डिसमिस कर दिया इस स्टेटमेंट को बाय सेइंग कि देयर आर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस जब मैं बोल के किसी चीज को डिसमिस करता हूँ, तो बेसिकली आई एम स्टिल कमिंग फ्रॉम द एंगल कि जो मैं सोच रहा हूँ वो 99% करेक्ट है, 1% एक्सेप्शन इज ओके, सो आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट। बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट एक्सेप्शन। आप जो बातें बोल रहे हो वो सही बातें हैं, लेकिन हर बात को सुनने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि मैं जैसे मुझे जो चीज पता है ना, लाइक यू वुड हैव हर्ड कि रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, 5 लोग उसको देखते हैं, पुलिस 5 लोगों से पूछेगी, 5 लोग अलग अलग स्टोरीज बताएंगे। व्हाई? They'll have their own perspective. Exactly. They'll identify different things. Yeah. Exactly. But why do they have their own perspective? It's the same event that happened. The event was not different for any of them. Exactly the same event happened. Why 5 different people are saying 5 different things? And then who is correct? सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है? नहीं. वो शायद बचपन में आपने वो स्टोरी सुनी होगी, हाथी वाली, So जो unless 5-6 yeah. अंधे होते हैं, वो एक को वो पूंछ पकड़ता है तो बोलता है ये सांप है, वो सूंड पकड़ता है या कान पकड़ता है, वो सब। तो उसमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है? Unless it is supported by something, obviously we cannot judge who is speaking truth. So yeah. या और यू कैन पुट इट दिस वे कि इसमें से ना तो कोई सच्चा है और ना कोई झूठा है, वो सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चे हैं। पर वो झूठे कब होते हैं? जब वो ये बोलते हैं कि मेरा ही सच पूरा सच है, तब वो झूठा है।
बट अगर वो ये मान के चलते कि ये मेरा सच है, ये मेरी स्टोरी है, मेरी साइड है, तो वो सच्चा है। और 5 अलग अलग स्टोरीज मैच नहीं होती हैं तो दैट इज फाइन। देयर इज फाइव वेज ऑफ लुकिंग एट समथिंग। I don't know if how many people know this, but you probably have heard about the string theory. So the string theory, suna hai ya nahi, is fine. But Einstein, before he died, he was working on this unified theory. जिसमें he was very convinced कि um, there is one equation and one theory that basically describes everything, which is called theory of everything. एक book उस पे movie भी बनी है। So theory of everything is the string theory, which he was very convinced that everything can be explained by one theory. But he could not complete it before he died. And then people took the work forward. 40, 50 years later, they were able to come up with something, but then they were surprised to find out that even that theory had 5 versions. How is it possible? We are working on a theory of everything which has 5 versions. It's kind of like oxymoron thing. And then they realized कि what happened is कि जैसे 6 है, एक 6 को इस एंगल से देख रहा है और दूसरा 6 को दूसरे एंगल से देख रहा है, उसको 9 नजर आ रहा है, तो इट्स जस्ट द वे दे वर लुकिंग एट इट, दे थॉट इट्स डिफरेंट। इट्स जस्ट वो कहां खड़े थे, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होता है, उससे हमको जो दिखता है हम मान लेते हैं पूरा सच है, जो दूसरा देख रहा है वो गलत है, उसको वहां से कुछ और दिख रहा है। देख सब एक ही चीज को रहे, तो देख अलग अलग डायरेक्शन से रही है, तो दिख अलग अलग चीजें भी अलग है नहीं, दिख अलग रही है। इज दिस डिफरेंस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चीज एक ही है, आप उसको किस एंगल से देख रहे हो वो चेंज हो जाती है। Yeah, yeah. You may have seen these abstract kind of artwork that people create, जिसमें वो 3D kind of a thing है, जिसमें Yeah, yeah. वो कहते हैं ना, the way you look at it, ऐसे देखोगे तो आपको कोई फेस नजर आएगा, ऐसे देखोगे तो आपको Correct. कुछ नहीं नजर आएगा, all that. So it's one thing. So it's the thing itself is not changing. It's your looking that is changing. And exactly the same thing applies in life about our beliefs. तो हम जैसे देखते हैं हमको वैसा ही दिखता है, हम उसको पकड़ लेते हैं और हमें लगता है सबको ही ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही तो होता है। सो वैसा नहीं होता है। Yeah. सो अल्टीमेटली कमिंग डाउन टू दिस, क्योंकि अगर ऐसा ही होता है तो आपने तो अभी खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया है बातें करते हुए। अगर ऐसा ही होता है तो मैंने आपसे पूछा कि यू हैव किड्स, डज योर किड हैव टू प्रूव टू यू बिफोर यू लव दैट किड? एंड यू सेड नो। तो आप ही तो 2 अलग अलग रूल्स पे चल रहे हो खुद ही। So love is different. Capability is different. I see. इट बॉइल्स डाउन टू दैट, हम अंदर जा रहे हैं, आप अभी भी सरफेस पे ही खेल रहे See. हो, हाँ, नहीं, आप because अभी भी see, ऊपर थे। love sometimes remains in relationship as well. Even if the love is there, that is fine. But major thing for the abandonment and all those things, all those discussions, whenever when other person is not fulfilling the responsibility or is not doing what is capable of, so judgment वहां पे आ जाता है। प्यार की तो कोई हो ही नहीं है, because relationships में suppose blood relationships हो गए या relatives भी हो गए, so love is there. ऐसा नहीं है लव इज नॉट देयर, बट शादी में भी 10 लोग आते हैं, राइट? प्यार रहता है सब में, आते हैं सब लोग, बट वो जो जजमेंट जो चलता रहता है कि ऐसा नहीं हुआ या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, सो ऑल दोज थिंग्स हैपन क्योंकि वो वहां पे आपकी वो जजमेंट केपेबिलिटी नहीं और होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जजमेंट वो नहीं होता है। आप जो बता रहे हो और जो यूज वर्ड कर रहे हो वो जजमेंट नहीं है। ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ ये जजमेंट नहीं है। जजमेंट होता है कि यू आर लाइक दैट। सो
आपने कोई काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया, ये तो फैक्ट है। तो मैं अगर आपको ये बोल रहा हूं आपने ये काम नहीं किया, ये तो फैक्ट है। ये जजमेंट नहीं है, ये तो फैक्ट है, आपने नहीं किया। जजमेंट क्या होगी कि मैं आपको बोलूं आप कामचोर हो, करेक्ट। ये जजमेंट है। हम्म। तो आप इससे नहीं घबरा रहे हो कि काम नहीं हुआ है, वो तो आपको भी पता है काम नहीं हुआ है। आप इससे घबरा रहे करेक्ट। हो कि मैं आपको ये नहीं बोलूं कि आप कामचोर हो, ट्रू। राइट? ट्रू। हाँ, तो यस। वो जजमेंट है। हाँ, जजमेंट इज लेबल्स, जजमेंट इज नॉट फैक्ट्स। या जो हो रहा है वो तो आपको भी पता है, सबको पता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो तो करेक्ट। कैपेबिलिटी है नहीं है, ये तो फैक्ट्स की बात है। आपको उससे नहीं है, आपको ये इसकी वजह से अब लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे। Correct. Labeling is what is pinching, right? And that is judgment. Sometimes So it is, sometimes it is supported by facts, sometimes they are not supported by facts, but labeling is what is affecting. करेक्ट, और लेबलिंग अफेक्ट करती है तो हमें धक्का कहाँ लगता है कि नाउ आई विल नॉट बिलोंग। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई सोचे कि अरे ये तो कामचोर है, ये इसको तो आता नहीं कुछ, ये तो ऐसे ही फेक कर रही है एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे आपको कैसा लगेगा ना, nobody would want to associate with a person like that. Who would want to associate with a person who is like this? तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें ना कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती हैं। ये मैं आपको जैसे बता रहा हूं, तो इसको ऐसे मत सुनना कि नहीं लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचती, कोई ऐसा नहीं सोचता है। ये मैं आपको सब कॉन्शियस आपका कैसे बात कर रहा है मैं वो सुना रहा हूं, आपके बहुत ही अंदर की बात आपको आज खोल के सुना रहा हूं। तो इसको मिस इंटरप्रेट ऐसा मत कर लेना, नहीं नहीं ऐसा डायलॉग मैं तो ऐसा नहीं सोचती, कोई भी ऐसा नहीं सोचता, किसी के कॉन्शियस माइंड में ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। ये इतना सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, इतना डीप लेवल पे होता है कि आप पकड़ भी नहीं सकते हो इन चीजों को। Yeah. क्योंकि हम एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड का, कि दिस मीन्स दैट, ए मीन्स बी, बी मीन्स सी, सी मीन्स डी, दैट मीन्स ए मीन्स डी। कट से कनेक्शन हो जाता है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। इट्स लाइटनिंग स्पीड फास्ट कनेक्शन दैट हैपेंस। सो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं तो ऐसा, ये तो कभी थॉट नहीं आती है, किसी के नहीं आती, कोई नहीं पकड़ सकता इन सब थॉट्स को। और ये इतने सालों की कंडीशनिंग होती है कि आपके कॉन्शियस माइंड में तो ये है ही नहीं, बिकॉज एनी रेपिटेटिव बिहेवियर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को फ्री रखा जाता है ताकि कोई भी रेपिटेटिव बिहेवियर सबकॉन्शियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये तो ये कनेक्शन करना है तो मैं कर दूंगा, ये तो 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, तो आसान है। तो वो ट्रांसफर हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। तो आपका कॉन्शियस माइंड कभी नहीं पकड़ पाएगा, आप कभी नहीं पकड़ पाओगे इस चीज को। इस चीज को डिस्कशन करके या सोच के ऐसे कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एक ऐसे डीप लेवल की बात हो रही है जहां पे अगेन, क्योंकि आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो ना, मैंने लव वर्ड यूज कर दिया है, आप अभी भी उस पर जाए, बट प्रोफेशनल में ये कैसे, भूल जाओ वो सब कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें ऊपर ऊपर के लेवल की बातें। यहाँ बहुत अंदर जो हमारे जो इंस्टिंक्ट्स, हमारे जो रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस होते हैं, वो बहुत अंदर से आते हैं। बट आपका जो मैं कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस समय, वो ये है कि समथिंग हैपन्स एंड देन योर माइंड plays the program that is already existing in your subconscious. So the program runs and the program thinks कि okay, अब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, ये ऐसे है, I don't want them to think like this, so I don't want this, but they are. You cannot control how other people are thinking, ये तो किसी के भी बस में नहीं है। तो but you know कि लोग तो सोचेंगे। अभी सोचेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मेरी गलत इमेज बनाएंगे अपने बारे में, बट मैं ऐसी नहीं हूं, दिस इज नॉट राइट, सो आई एम रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। ये सारा इंटरनल डायलॉग चल रहा है।
तो इसका इसका तोड़ क्या है? तो आपके सबकॉन्शियस ने आपको इसका तोड़ भी दे दिया। ये सब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करो कि कंट्रोल, गो हार्ड, कंट्रोल एवरीथिंग, control people's thinking, control the way somebody would react, respond, or anything. Make sure you can predict, analyze, think, overthink everything. हर एंगल से सोचो, हर एंगल से देखो, कंट्रोल करो जितनी भी एंगल से हो सकता है। सोचने मत दो, किसी को भी मौका ही मत दो उस तरह से सोचने का। तो आई एम श्योर कि यू विल बी having a pattern of overthinking as well, Yes. Yes. overanalyzing, being over considerate. Yeah. So now I get to know, if I get to know about the labels, obviously I'll be more conscious to remove them and be nicer to them so that that thinking gets changed. So, yeah. Yeah, but it's not that. I think अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन से I would like you to conclude one thing, then that one thing will not be this. The one thing that I would like you to conclude is, why link these two things? Let them be two separate things. Let your capabilities, expertise, abilities, all these things be one thing, and let it be another thing that someone accepts you or not accept you. Hmm. तो आपको क्या है कि you have created this puzzle for yourself by training other people as well as training yourself to say कि मेरी कैपेबिलिटीज, मेरे काम, मेरी काबिलियत देखो और मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे मत देखो। Hmm. तो इसके लिए ना आपको हमेशा प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा, काम Yeah. का रहना पड़ेगा। Correct. हाँ, Hmm. तो कोई भी आपसे इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहा है क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, नॉट बिकॉज आप बहुत काम के हो, पर आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि आप काम के होने चाहिए। अगर आप काम के नहीं हो तो फिर आप किसी काम के नहीं हो बेसिकली। Yeah. हाँ, इसी के लिए Hmm. मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि Hmm. अगर Hmm. आपका जो बेटा है या बेटी है जो भी है, अगर वो काम का नहीं रहेगा तो आप उससे प्यार करना बंद कर दोगे क्या? वो आपके काम के नहीं, नहीं रहेगा क्या? नहीं, not like that. हाँ, तो वो जो जो वहां अप्लाई करते खुद के ऊपर भी Yeah, got it. कि मैं काम की हूं या नहीं हूं वो एक बात है, Hmm. 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 but that doesn't define कि somebody should accept you, like you, love you, all that. That Hmm. can't define it because then that's transactional, Yeah. है ना? Hmm. Hmm. हाँ, तो काम का तो टीवी भी होता है, वो भी बंद हो जाता है तो लोग फेंक देते हैं, तो फिर उसमें और आप में क्या डिफरेंस रह गया? Hmm. तो उसको हम बोलेंगे क्या, टीवी चल रहा है तो मैं उसको यूज कर रहा हूं तो देन आई एम टेकिंग केयर, मैं उसको साफ भी कर रहा हूं, मैं उसको अच्छा भी रख रहा हूं एंड ऑल दैट। इज दिस लव, इज दिस केयर, और इज दिस बिकॉज आई नीड दिस थिंग सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट? द मोमेंट ये टीवी खराब हुआ, मैं उसकी सफाई थोड़ी करूंगा, मैं शायद उसको घर में भी नहीं रखूंगा, आई विल थिंक ये जगह ले रहा है। तो फिर तो टीवी को मुझे हमेशा प्रूव करते रहना पड़ेगा अपनी जगह बनाए रखने के लिए, करेक्ट? Yeah. Yes. तो टीवी बन के मत रह जाओ, दैट्स माय Hmm. मैसेज। That was deep. Yeah. Thanks, Akarma.
ठीक है। Yeah, Nirmal, you wanted to say something? Yeah. So, Anamika, I wanted to ask, can you throw more light on that push and pull method? Because I was trying to relate and I could feel that I have fallen prey for that method 2 times in my last 2 relationship. Like generally what a partner does that वो push pull करके they create that fear of abandonment, and then they create scarcity, and then they manipulate, and then they dominate. So ये जो पूरा process है, is it always a trap या sometimes it's genuine also? नहीं नहीं, आप दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं नॉर्मल। पुश एंड पुल जो Okay. लोग करते हैं यूजुअली पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एन इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, और वो जब पुश एंड पुल करते हम्म हैं तो उसमें ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं कि इट्स अ ट्रैप, इट्स अ मैनिपुलेशन, इट्स दिस और दैट, हम्म होगा, ये मैनिपुलेशन तो होता ही है, नहीं, राइट? for my एंड case that push and pull के बाद वही manipulation ही हुआ, so that is the reason I'm relating back to back. हाँ हाँ, बट जो इन सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल से जब चीजें फियर से आ रही होती है ना, तो उसमें जो मैनिपुलेशन हम्म होता है इट्स एन अनकॉन्शियस फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हम्म उसको हम अब जैसे पीपल प्लीजिंग है, पीपल प्लीजिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, बट इट्स एन अनकॉन्शियस अनइंटेंशनल फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, जिसमें इट्स आई कैन से काइंड ऑफ एन इनोसेंट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, कि बस मुझे डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई जज ना कर ले, कोई रिजेक्ट ना कर दे, कोई छोड़ के ना चला जाए, तो मैं एक प्लीजिंग कर रही हूँ, राइट? मैं अंदर से कुछ और फील करती हूँ, बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? बट इफ you are being taken advantage of, if you are being said things, if you have fallen prey into traps which are could be more harmful emotionally, mentally, if there's any kind of abuse that's happening, हम्म then it's not just push and pull. That's it. Then it's something more than that. So ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. Does that make sense for you? Yeah, it answers. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Nirmal. Cool. Anybody else has anything else to say? We have some more similar conversations lined up for the coming, open calls as well. So ये जो fear पे आज हमने बात की है, the fear of abandonment, इसको इससे interlinked और भी कुछ fears होते हैं. So we will go deeper and explore this topic even further for the next 2-3 sessions. तो इसको बिल्कुल अच्छे से in depth we will try to understand these fears and उनका core क्या होता है, कैसे होता है. जैसे कि एक तो हमने start किया था about fear of abandonment, but then Lata also brought up something very valuable, कि that is also a kind of fear that we have, that what other people will think about me. और we will see कि दोनों fears के बीच में काफी commonalities हैं, 70-80% commonalities हैं. थोड़ा सा difference है 20%, but 80% commonalities भी हैं. ऐसे ही हम आगे जाके we will see and explore these different topics and see. But the whole point is that these fears, or maybe, I shouldn't say fears, ये जो situations, environment, चीजें जो होती हैं हमारी life में, they lead to insecure attachment styles, where we become fearful avoidance or dismissive avoidance, or we become anxious preoccupied. But अभी कैसा हुआ कि उसको वो insecure attachment style develop हुआ, and then to handle that insecurity, that instability inside us, we have to come up with a trauma response, right? And to फिर उस trauma response के बनाते बनाते हम वो insecurity becomes a style, and it starts coming up in the form of our adult relationships, right? So ऐसा नहीं है कि हमें fear of abandonment है. Trust me, I'm telling you guys, अपने personal experience I have gone through um, a very high anxiety space for a very long time in my life.
ऐसा कुछ भी नहीं है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट तब होता है कि जब आपको आपका सिर्फ कोई लव्ड वन छोड़ के चला जाए, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। ऑफ कोर्स मेरा अगर कोई रोमांटिक पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा तो माई वर्ल्ड वुड बी अपसाइड डाउन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो तब भी ट्रिगर होता है जब आपके ऑफिस में आपसे कोई डिसएग्री कर ले, आपका कोई क्लाइंट आपसे बात ना करे, कोई पर्सन जिससे आपने 2 3 बार 4 बार बात की है और वो आपसे बात करना छोड़ दे, बिकॉज हम वो लिंक छूट जाता है टू इमोशनली रेगुलेट आवरसेल्फ। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू बिकम सुपर ह्यूमंस की हमें कोई फर्क ना पड़े। वो जो सुपर ह्यूमंस होते हैं, दो सुपर ह्यूमंस आर कॉल्ड डिसमिसिव अवॉइडेंट्स। So that's an insecure attachment style in itself. I just wanted to add to this one. So, um, this story which I have used many times है कोशो की स्टोरी, तो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत बार सुनी है तो बोर हो जाएंगे. बट आई वुड लाइक यू, जिसने नहीं सुनी है उसके लिए, you can check our blog and there is a blog called Why Did the Tea Spill? Check that. तो इसको ना ऐसे देखना है आपको, सारे सब लोगों के लिए है ये मैसेज, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे इसको ऐसे देखना है कि चीजों को ना कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है कि ये पर्सनल प्रॉब्लम है, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता. यू आर वन पर्सन, यू आर एवरीवेयर, ऑल दीज प्लेसेस. हमें जब कुछ करना आता है ना तो वो हम हर जगह कर सकते हैं, जब हमें कुछ नहीं करना आता है तो हम किसी भी जगह नहीं कर सकते. सो यस, प्रोफेशनल सेटअप में द प्रॉब्लम्स विल लुक डिफरेंट, कंटेंट अलग हो जाता है, चीजें अलग हो जाती हैं. पर्सनल लाइफ में कंटेंट इज डिफरेंट, दैट्स फाइन. ये सरफेस लेवल की बात है, इसमें मत उलझो. इनको सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज करो. इंसिडेंट्स को सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज करो कि ये इंसिडेंट हुआ और इससे मुझे ये दिखा. नाउ अगर वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है या फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड अगर वो अंदर है तो वो हर जगह दिखेगा. इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक जगह तो नहीं कर रहे हो दूसरी जगह कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. तो आई कैन बेट माई मनी ऑन दिस थिंग कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो ये बोले कि इस सिचुएशन में मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती, इस सिचुएशन में मेरे को ये प्रॉब्लम होती है. नहीं, हो ही नहीं सकता है. ये हो सकता है कि शायद उसने उसको मैनेज करने के लिए कोई तरीका ऊपर का कुछ लगा लिया हो, वो अलग बात है. ऊपर का तरीका लगा के मैनेज करके हमने एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया है, वो एक अलग बात है. पर कोई ये बोले कि मुझे ये चुभ नहीं रही है, यहां नहीं चुभती है यहां चुभती है, ये इम्पॉसिबल है. चुभ रही है बट मैंने बस उसको मैनेज करने के लिए कुछ तरीका निकाल के उसका एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर लिया. सो जो वर्क हम जिसको हम प्रमोट करते हैं, द व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉल्वेबल होती हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो आई नेवर प्रमोट कि हम बीमारी को पाल के रखें. मैनेजमेंट इज दैट कि आपको अवेयरनेस है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. अब उसको हटाने की बजाय, उसको क्योर करने की बजाय हम मैनेजमेंट टेक्निक सीख लेते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसके साथ जीना कैसे, इसको पालना कैसे. वो भी एक अप्रोच है बट वो मेरी अप्रोच नहीं. तो yes, there are six things which are incurable, which nothing can be done about it. Perhaps like your personality traits and things like that, they can't. But behavioral traits, conditionings, mother wounds, father wounds, insecure attachments, all these things are solvable. पालने की जरूरत नहीं है इनको. तो these conversations that we do, इनकी तो एक टाइम लिमिट होती है, 1 आवर 1.5 आवर मैक्सिमम. कई बार हम 2 घंटे तक बात करते हैं. इन कॉन्वर्सेशंस का पर्पस अवेयरनेस क्रिएट करने का है, क्लैरिटी लाने का है कि आप लोग कहाँ अटके हो. तो ना, नेवर बी फूल्ड बाय दिस थिंग कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बिकॉज मेनी पीपल गेट स्टक इन दैट ट्रैप कि अभी तो मेरे को पता चल गया. पता चलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. आपको कुछ तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास, आपको तो अवेयरनेस है तकलीफ की, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है, इससे आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली है.
आपको बस ये पता चल गया कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ये अवेयरनेस मिल गई है, अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। डॉक्टर आपको एक कंसल्टेशन में कुछ चेक करके उस टाइम पे इतना ही बता सकता है, वो 1 घंटे में उस कंसल्टेशन में आपकी डायबिटीज ठीक नहीं कर सकता है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट, यू हैव टू टेक अ ट्रीटमेंट प्लान एंड फॉलो इट, और कुछ टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। सो नेवर एवर, चाहे वो हमारी कॉन्वर्सेशन हो, चाहे आप किसी और की कॉन्वर्सेशन अटेंड करो, चाहे कोई बुक पढ़ो, चाहे कोई ब्लॉग पढ़ो, चाहे कोई वीडियो देखो, कुछ भी करो, आई एम गिविंग यू दिस रूल ऑफ थंब। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये अडॉप्ट दिस, कि कहीं से भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसको दवाई मत समझ लेना। प्रिस्क्रिप्शन जो पेज पे लिखी होती है वो दवाई नहीं होती है, उसको जाके लेनी होती है दवाई, उसको केमिस्ट को दिखा के एक्चुअल दवाई लेनी है। तो ये मत समझ लेना कि प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है तो ये दवाई होगी, मैं पेज ही खा जाता हूँ तो उसी से ठीक हो जाऊंगा। नो, डोंट डू दैट। एंड आई एम श्योर कि ये सब, इट साउंड्स ऑल वेरी फनी द वे आई एम सेइंग एंड ऑल दैट, बट कई बार हम यही कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम प्रिस्क्रिप्शन को ही खा जाते हैं और सोचते दवाई खा ली। So don't do that. Use these calls, these setups to bring awareness to कि आप कहाँ अटके हो। उसकी क्लैरिटी लाने के बाद अब वहां पे काम करने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो क्लैरिटी आने का मतलब नहीं है कि वो अटका हुआ अभी चला गया। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी लता के साथ बात हुई तो उसको भी ये पता चल गया कि वो कहाँ अटकी है। पता चलना कि कहाँ अटके इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई एम वेरी वेरी क्लियरली टेलिंग यू, ये अवेयरनेस से प्रॉब्लम नहीं जाती हैं, ये डीप कंडीशनिंग्स होती हैं, इनको निकालना पड़ता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में वो नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट टू फॉलो एंड ऑल दैट, तो वो करना होता है अवेयरनेस मिलने के बाद कि ओके हम यहाँ अटके, this is the problem, this is the thing I need to bring my focus on and I need to work on this thing. So use these conversations, many other conversations we have on our channel, almost 150 conversations are there. Check our YouTube channel, तो वहाँ पे जो भी आपको टाइटल से रेजोनेट हो, you check that. But once again, conversations तो 1 घंटे 2 घंटे की होती हैं, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ एनालिसिस हो सकती है, डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये कॉन्वर्सेशंस उसी पर्पस के। That's all I wanted to say. Cool. Okay, then we will see. We'll be seeing you guys for the next open conversation. And in case you wish to work on your insecure attachment styles, don't forget to check either our e-learning journeys, or you can start with taking the healing journeys if you feel so. So that's something that we have. It's not necessary to work with us per se. Just make sure that you research enough, and after developing the awareness, uh, take steps forward, right? Do something about these things. So that's that. Because I mean, it's just it requires your conscious intention, right, and attention, and the right way of course doing these things. And the mind that has created the problems cannot solve it. हम कोशिश कर सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है, लाखों यूट्यूब वीडियोस हैं ऑन दीज टॉपिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो देखने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, हीलिंग नहीं होती. So just go in that direction. That's all I can say to all of you. And yeah, keep walking. We will see you guys for the next call then. Thank you for joining the call today. Thanks everyone. Take care. Bye-bye. Night. Thanks. Thanks, Thank Akarma. you. Thanks, Anamika. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks.